Following are the balances in the cost ledger of a manufacturing company on 1st of April 2017. अभी हमें क्या दिया है इन लोग ने? They have given us the cost ledger. ठीक है, लेजर्स दिया है और किसका है? वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है. And this is given on the 1st of April 2017. Now, how to identify whether this sum is of a integrated or it is of a non-integrated? अगर आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया है, if they have given you the balance of cost ledger control account, or you can say the general ledger control account, और बाकी ओपनिंग बैलेंसेस भी दिए, ओके, बाकी क्या दिया है? if they have given even the opening balances of the other accounts, so you can easily make out that this is a non-integral accounting system. This is how you can recognize. Now देखो, अभी याद रखना कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ऑलवेज जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. सो इवन इफ समटाइम द बैलेंस इज ऊपर सिर्फ रुपीज लिख दिया, तो अगर आपको सिर्फ फिर कहां पर उसको ये करोगे, पोस्ट करोगे. सो दैट इज व्हाई दे हैव जस्ट गिवन, मतलब याद रखना कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस. एंड सी नाउ किस का बैलेंस दिया? दे हैव गिवन अस द बैलेंसेस ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द 4 अकाउंट, जिसमें से फर्स्ट 3 आर डेबिट बैलेंस एंड द cost ledger control is having a credit balance. So what we are going to do, हम वैसे भी हमें क्या करना है? cost control accounts बनाने सारे. That is we have to prepare all the ledgers account. जितना क्वेश्चन में आएगा उतना ledger accounts will be prepared. So this every जिसका भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया, that will be to balance brought down, और इसका क्या होगा? by balance brought down. बस that's it. So this is your opening balance. अब किसका है? store ledger control account. See, I'm not going to write down the whole account पे पूरा नाम लिखेंगे, but the what is the short form for this? SLC, work in progress ledger control account, that is WIP ledger control account. So इसका बैलेंस है 22,800, तो हम उसको डेबिट साइड में जाएंगे WIP अकाउंट के, एंड वी आर गोइंग टू राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट. So finished goods stock ledger control account में जाएंगे and we are going to write it down on the debit side 12,000 rupees. Cost ledger control account 51,800. So you are going in the cost ledger control account and writing down on a credit side. इतना समझ में आया? ये सिर्फ हमने ओपनिंग बैलेंस को सिर्फ अब तक पोस्ट किया. You are given the following information for the year ended 31st March 2018. आपको क्या दिया है? आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन दिया. वो इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन द पोस्टिंग पार्ट. फर्स्ट वन इज परचेज ऑफ मटेरियल. नाउ इट शुड गेट क्लिक कि परचेज ऑफ मटेरियल है, तो मटेरियल रिलेटेड कौन सा अकाउंट है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. सो व्हाट विल बी, और मैंने आपको क्या बोला? अगर इफ यू आर परचेजिंग द मटेरियल, व्हाट विल बी द एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. But here you are not writing it down the cash. Here which account is reflected? Here the cost ledger control account is reflected. So the journal entry will be store ledger control account debit to cost ledger control account. ठीक है? Since double entry bookkeeping system है, तो 2 effects आएंगे. ठीक है? Next one, direct factory wages. Now you should remember all the direct किधर जाता है? WIP account में. So WIP account debit. Wages related कौन सा account है? Wages control account. So WIP account debit to wages control account. Next one is manufacturing expenses. So manufacturing expenses मतलब कौन से है? ये production related expense है. So either you can write down the work overheads, or you can write it down the production overheads, or you can write it down the manufacturing overheads in the account ऊपर. So what will be the journal entry? Work overheads account debit to cost ledger control account. See expenses है तो expenses to cash, तो हम cash नहीं लिखते, cash के बदले क्या लिखते हैं हम? Cost control account. Next is selling and distribution. So selling and distribution account debit to cost ledger control account, because expenses account debit to cost ledger control account. Material issued to production. आपने material कहाँ पर issue किया है? प्रोडक्शन के लिए इश्यू किया है. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर WIP. आप प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया? मटेरियल इश्यू किया है. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? WIP account debit to store ledger control account. And see why store ledger account will be credited? Issue why? मतलब material is going out. So debit what comes in, credit what goes out. So this, for this reason store ledger control account will be credited.
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड. नाउ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहां पर रिकवर्ड होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो भी बैलेंस होता है वो कहां पर जाता है? डब्ल्यूआईपी अकाउंट में. सो व्हाट विल बी द एंट्री? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वर्क ओवरहेड्स अकाउंट. रिकवर्ड मतलब उसका बैलेंसेस कहां पर जाता है? एट द एंड व्हेन यू क्लोज द अकाउंट, वेयर यू पोस्ट इट. So from the factory it goes in the WIP. So WIP account में receive होगा. So it will be debited and manufacturing account, or you can say the factory overheads will be credited. Selling and distribution expenses recovered. अब selling and distribution expense कहाँ पर recovered होता है? Cost of sales account में. So what will be the journal entry? Cost of sales account debit to selling and distribution overheads. Next one is sales. What will be the journal entry for the sales? Yes, cost general this cost control ledger account debit to costing profit and loss account. Yes, to costing profit and loss account. Correct. Stock at the end. Though this is a closing balance which has been given. Stock मतलब cost ledger control account का closing balance is given. Then stock of the finished goods at the end. मतलब ये finished goods account का finished stock ledger control account का closing balance is given. Opening on the debit side, then closing on the credit side. And WIP at the end, matlab closing balance is given of the WIP account, that is 24,700. So again a closing balance, and it will be recorded in the credit side of the account. Prepare the related cost control account. तो आपको इधर देखो almost सारे accounts reflected हुए. All the accounts you will have to prepare. 3-4 lines का make all the accounts, give the heading. See, prepare all the ledgers account and just give the heading. Work in progress, ledger control account. Finished goods ledger control account. Selling and distribution. यहाँ पर हम administrative overheads नहीं बना रहे. Why? Because there is no entry related to it. अगर कुछ information दिया है question में, then it's fine. You will prepare it. But अगर adjustment ही नहीं दिया तो there is no need to prepare it. Then cost, either you can write cost ledger control account or you can write down general ledger adjustment account. But in this sum, we have a cost ledger control account. तो हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे. आप लोग बोलोगे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखो ट्रायल बैलेंस में व्हाट इज द वर्ड दे हैव यूज्ड इन द क्वेश्चन? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. दैट इज व्हाई अगर यहाँ पर जनरल लेजर वर्ड यूज करते थे तो आप हेडिंग देते थे जनरल लेजर एडजस्टमेंट. चलो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग पार्ट नाउ. फर्स्ट वी हैव टू पोस्ट द ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस. सो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस किस कौन से अकाउंट में दिया है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. सो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पर यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000. Then we have a WIP ledger control account में debit balance of 22,800. Go in the WIP account and write down to balance brought down 22,800. Next is finished goods ledger control account, balance is 12,000 rupees. So finished goods ledger control account to balance brought down 12,000. And the last one is general ledger control account, that is cost ledger control account. उसमें क्रेडिट बैलेंस था कितना? 51,800. सो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,800.
Next. Now start with the journal entries. Purchase of material. So store ledger control account debit to cost ledger control account. So as I told you, एग्जाम में आपको पूरा यूज करना है, बट अभी हम क्या करेंगे, हम अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म्स लिखते जाएंगे. सो इन द स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू cost ledger control account 50,000 rupees. So write down to 50,000. तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर. सो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 50,000. Next is direct factory wages. So which account will be reflected? Direct है तो WIP. तो WIP ledger control account debit to wages control account. So in WIP to wages control account 70,000 and in wages control account by WIP account 70,000. Are you all getting it up? So if you know the journal entry, it becomes very much easy for you to post it up. Next is manufacturing expenses, 44,600. So either you write, as I told you, either you write down manufacturing expenses or you write down the work overheads, or you write down the production overheads, or you can write down the factory overheads. कुछ ये इसमें से कोई भी एक नाम लिख सकते. So what will be the journal entry? I'm using the word work overheads. So work overheads account debit to general ledger control account. So in work overheads to general ledger control account 44,600, and in general ledger control accounts, that is cost ledger control account by work overheads, or you can write down the factory overheads 44,600. I'm writing it down over here, the factory overheads. It would be easier for you all as well. Next is selling and distribution expenses. So journal entry will be selling and distribution account debit to cost ledger control account 15,400. So in cost ledger control account by selling and distribution account. Selling and distribution overheads control account. Just write down over here, selling and distribution overheads control account. Material issued to production. So WIP account debit to store ledger control account. To store ledger control account.
47,200. In store ledger control account by WIP. Next is manufacturing expenses recovered. So WIP account debit to factory overheads account. So in factory overheads by WIP to factory overheads account. Next is selling and distribution expenses recovered. So cost of sales account debit to selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads control account debit. Selling and distribution by cost of sales, COGS. Next one, sales कितना है 1,60,000. So in costing profit and loss account, you are going to write down by cost ledger control account, and in cost ledger control account to costing profit and loss account. To like 60,000. In costing profit and loss account by cost ledger control account. Then they have given us the closing balances, stock of material at the end. Buy balance,
Then we have a finished goods का closing balance. $14,700. We have WIP at the end, 24,700. So with this, we are done with the posting. Now, see, we have made the accounts in the order only. कौन से किधर जाएगा बैलेंस हमने वो ऑर्डर में ही बनाया, तो देयर इज नो नीड टू गेट पैनिक. डायरेक्टली आप देखो अभी अकाउंट को क्लोज कर सकते हो. सी विच साइड इज हायर, डेबिट के क्रेडिट. डेबिट साइड इज 67,000, whereas credit side is also 67,000. So this account got closed. यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं बचा. So close this account and the balance is 67,000. Then next wages control account will be closed. 70,000 है. 70,000 will be written on both the sides. And wages control का balance कहाँ पर जाता है? While doing the theory, I told you it goes in the cost ledger control account. And almost debit side ही इसका balancing figure आता है. So to cost ledger control account, 70,000. Next is factory overheads will be closed. It's getting tallied. देखो दोनों tally हो रहा है. But नहीं, wait. It's 600, it is 440. So there will be a balancing figure. $44,600 600 will be written on both the sides. तो जो बैलेंसिंग फिगर आया इट गोज इन द प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब तुम लोग बोलोगे व्हाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं? इसका ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं होगा. तो जो भी इनकर्ड होगा दैट विल बी आर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. सो दैट इज व्हाई इट विल गो इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर इज हाउ मच? 160 रुपीज. इसका सेकेंड इफेक्ट ही अभी दे दो. इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 160. नाउ दिस इज डन. अब किधर आएगा? WIP में. सी WIP अकाउंट में क्रेडिट साइड देयर विल बी अ बैलेंसिंग फिगर. व्हाई? बिकॉज डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट. 1,84,440.
तो बैलेंसिंग फिगर इसका कहां पर जाता है? WIP अकाउंट से, obviously in the finished goods ledger control account. So by finished goods ledger control account. 1,59,740. So this will go in the year to WIP ledger control account. 159,740. Now debit side is higher than the credit. See the total, 1,71,740. इसका बैलेंसिंग फिगर, फिनिश गुड्स का बैलेंसिंग फिगर गोज इन विच अकाउंट? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. So here by cost of goods sold, or you can write down cost of sales, sorry. This minus this. 1,57,040 rupees. Cost of goods sold Nicholas, cost of sales. Just replace over here cost of sales. इसका बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग डालेंगे to ledger control account. Is selling and distribution. Before closing cost of sales, it's better to close down your selling and distribution over its account. First, this account will be closed. Selling and distribution account में debit side is higher than the credit. 1,5. Balancing figure on which side? Credit side. So this will go in the costing profit and loss account by ₹80. So go in the costing profit and loss, write down to selling and distribution over its control account 80. कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. सी ओनली डेबिट साइड इज ओनली द बैलेंस. सो सारा कुछ कहां पर जाएगा? 1,72360. This whole will go in the costing profit and loss account. $1,72360. So in costing profit and loss account, to cost of sales. Oh, will require.
sales. अब पहले costing profit and loss account will get closed and later on cost ledger control account will be closed. Huh? Debit side is higher than the credit. Take the total. 172,600. By cost ledger control account. So कितना balancing figure आएगा? This minus this. As I told you, second last account which you are going to close will be P&L. 12,600. So 2 costing profit and loss account 12,600. अब close करो last cost ledger control account, whatever would be there, that will be the closing balance. Why? Because we have a opening balance. तो जो भी balancing figure आएगा will be a closing balance. 161800. नहीं, wait. Have I missed something? हाँ, वेज कंट्रोल का बैलेंस भूल गए लिखना. बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितना आया था उधर? 70,000. नाउ इट विल गेट क्लोज. 231800 and balancing figure by balance, sorry, to balance brought down or carried down.